Assalamu alaikum, this is Imdadullah here, first year MBBS student at Secured 185 marks in MDCAT. I did my FSC from Jinnah College. Special student of MDCAT 2025 will be to rely on your books and Is to be stay focused, confident, and consistent. Because the consistency is to stay true to their goal and keep their eyes on their goal. I think this is the most Stay dedicated. Start now. Now is the time. Go for it. Assalamu alaikum, welcome to my YouTube channel with another video. It's me Abu Bakr Sadiq, first year MBBS student at Syed Medical College स्वात. जैसा कि मैंने अब स्टूडेंट्स को कहा था कि मैं SMC के टॉप एग्रीगेट स्टूडेंट्स ही उनका डेटा कलेक्ट करके आप स्टूडेंट्स के साथ शेयर करूँगा. तो वीडियो एंड तक देखे स्किप ना करो एंड ट्राई योर बेस्ट टू गेन समथिंग स्पेशल फ्रॉम देम. चलिए वीडियो की तरफ. Assalamu alaikum, this is Imdadullah here, first year MBBS student at Syed Medical College. I have completed my FSC from Peshawar Model Degree College, Dalzag Road, Peshawar, and then I secured 182 marks with degree grade 92.036. At the end, I will give a kind suggestion to my MDCAT aspirants. Do work hard, ignore the people, what are they saying about you, and go ahead. Habiba Rahim, I am from Charbagh, Swat. I secured 185 marks in MDCAT. I did my FSC from Jinnah College, Peshawar, and I want to give suggestions to MDCAT aspirant to continue their hard work. Don't lose courage and have faith in yourself. This exam is challenging but not impossible, and work dedicatedly to achieve your all MDCAT aspirants. My name is Mohammad Atif and I am currently a first year MBBS student at Syed Medical College Swat. I did my FSC from Oxford Group of Colleges, Karak, and then did MDCAT in 2024 in which I got 189 marks out of 200. So basically I will give little bit suggestions to my juniors. So first of all, be limited to your books, your original books, and secondly, be limited to resources. I mean use specific resources. Do not go for multiple resources for specific subject. Assalamu alaikum. This is your brother Zakaria from Temargara. I had done from my FSC from Islamia Model College Temargara. I had obtained 188 marks out of 200 in MDCAT 2024. I have one advice for you. Stay dedicated. Start now. Now is the time. Go for it. My name is Sanam Salim and I'm from Mingawar, Swat. I got 184 marks in my MDCAT. The suggestions that I want to give to MDCAT aspirants is to stay true to their goal and keep their eyes on their goal. I think this is the most important time for every aspirant, so they need to avoid all the extra things and focus on their studies. Secondly, I want to say that they need to build their concepts and practice a lot of MCQs to make their concepts clear about each and every topic. Assalamu alaikum MDCAT aspirants. My name is Hamza Khan Tanoli and I belong to Hazara division. I secured 188 marks in MDCAT and I also secured 989 marks in my FSC and I secured 1024 marks in my matriculation. And I would like to say that medicine is a journey of a few people, but it is very worth it in the end. But I would also like to say a few pieces of advice for people who want to aspire for a medical college, and that is, please focus on your books. Don't listen to as many lectures as you can. Just focus on the fundamentals, focus on your books, focus on completing your syllabus, and if you can, then maybe watch some lectures of NGCon and also practice, because practice is what will make your journey perfect and what will ensure your entrance into a medical college. It's me, Ahmad Naveed, from district Laki Marbat. I secured 184 marks in 2024. मैं जो जूनियर है इसको ये एडवाइस देना चाहता हूँ कि बस अपना जो एकेडमी ज्वाइन ना करे प्लीज़, और जो अपनी बुक्स है उस पर बस फोकस करे. My name is Eman Halik. I belong from Charsada. I did my FSC from Islamia College, Peshawar, and I got 180 marks in KMU MDCAT. एंड मैं आप लोगों को ये सजेशन देना चाहूँगी कि मतलब आप लोग अपने टेक्स्ट बुक पर फोकस करें, क्योंकि मैक्सिमम कोर्स टेक्स्ट बुक से ही आता है. और एक दूसरा सजेशन जो मैं आप लोगों को देना चाहती हूँ कि कोई एकेडमी मतलब मस्ट ज्वाइन करे ना, इससे मतलब कंसेप्ट डेवलपमेंट ये सब कुछ होता है. तो आप लोग को एकेडमी भी ज्वाइन करनी चाहिए और मतलब हार्ड वर्क करना चाहिए और मोटिवेट रहना चाहिए. तो I did my FSC from John Zeph College. I belongs to Swat and I got 184 marks in MDCAT 2024.
मेरा सजेशन आने वाले जो जूनियर्स हैं उनके लिए ये है कि आप अपनी स्टडीज़ के साथ कंसिस्टेंट रहे। कंसिस्टेंसी ये बहुत ज़रूरी होती है। इससे मेरा नाम नवीद अली है, मैं डिस्ट्रिक्ट कुरम से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैंने FSC इस्लामाबाद कैरियर कॉलेज से की है। मेरे MDCAT में 182 मार्क्स थे। मेरे MDCAT एस्पिरेंट्स को ये सजेशन है कि सक्सेस के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको शुरू से ही कंसिस्टेंट स्टडी करनी पड़ेगी। My name is Fariha Nemat. I got 183 marks in MDCAT with a stunning aggregate of 93.0227 and got admission in SMC SWAT. The message I want to give the MDCAT aspirant is that hardship is a part of life. If the time you are facing is hard, but future is going to be bright for you. So be focused. Hello everyone, Mohammad Ayat here. I did my FSC from Islamic College Peshawar. Right now I'm a first year medical student at Saidu Medical College SWAT. And certain suggestions that I would love to give you regarding your MDCAT would be supplement your KPK books with Federal and Punjab क्योंकि अब आपकी नेशनल MDCAT होगी। इसके अलावा गिव प्रैक्टिस टेस्ट्स ऑफ MM and NGCon, वो भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती हैं। They help you understand concepts and practice them. My name is Mohammad Muid. I am from District Mumand. I did my FSC from APS SWAT. मेरे MDCAT में 181 मार्क्स आए हैं। जूनियर्स के लिए और MDCAT एस्पिरेंट्स के लिए आने वाले जो हैं उनके लिए ये एक एडवाइस है कि आपने कभी होप जो है वो नहीं लूज़ करनी। यही जर्नी है जो आपके डेस्टिनेशन को ब्यूटीफुल बनाती है, तो अपने ऊपर ज़्यादा प्रेशर ना डालें और स्टडीज़ को अपने ऊपर हावी ना करें और स्मार्ट Assalamualaikum, this is Muhammad Usman from Mardan. I did my FSC from Punjab College Mardan. I got 182 marks in KMU MDCAT 2024. I suggest newcomers to please rely on your books and not to focus on others out of syllabus. From Mardan, I had done my FSC from Ghazali College. I secured 184 and MDCAT 2024. My kind suggestion to all my juniors is to chill and study smart but not hard. I'm Alex Safirullah from Shangla, and I did my FSC from Islamic College Peshawar. I secured 176 marks in MDCAT 2024, and my kind suggestion to all my junior is that to be committed, dedicated and focused and rely on your work. Atif Aziz Khan, I am from Peshawar. I did my FSC from Peshawar Model Degree College. I scored 183 marks in MDCAT. The suggestion that I want to give to the MDCAT aspirants that be calm, don't panic, don't get tensed, just believe in yourself and believe in your hard work and you will be successful inshallah. Assalamualaikum. I am Abdul Basit from District Mumand. मैंने मैट्रिक इस्लामिया कॉलेज और स्कूल इस्लामिया कॉलेज पेशावर से किए और APC गवर्नमेंट कॉलेज पेशावर से किए और पहले अटैम्प्ट पे सैयद मेडिकल कॉलेज स्वात में एडमिशन मिली है। मेरे जूनियर के लिए ये सजेशन है कि स्टडी चाहे ज़्यादा वक्त की हो या थोड़ी वक्त की, लेकिन हेल्दी होना चाहिए और स्टडी हेल्दी तब होगी जब आपकी पिकिंग पावर ज़्यादा हो, और इसके लिए ज़रूरी है कि आप वक्त पर सोए, वक्त पर जागे और गेम के लिए थोड़ा वक्त निकालें। I am from district Kodaksai. I got 176 marks in MDCAT out of 200. मेरे जूनियर के लिए एक सजेशन है कि आप जो भी टॉपिक सॉल्व करते हैं उस टॉपिक पर हर एंगल से MCQ सॉल्व कर ले, अपने कॉन्सेप्ट को मजबूत बनाएं। Assalamualaikum everyone. Here is Sangeet Nasir from first year MBBS Saidu Medical College. I have done my FSC from Government Degree College Mingora Swat and I have scored 183 out of 200 in MDCAT 2024. I would suggest to all MDCAT repeater and freshers to rely on your books and be focused and aim for the better scores. Ahmed from Mingora Swat. I have done my FSC from Government Degree College Mingora Swat and secure 182 marks in KMU MDCAT 2024. मेरे फ्रेशर्स और रिपीटर्स के लिए यही सजेशन होगी कि आप अपनी बुक पर फोकस करें, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें, क्योंकि MDCAT MCQs इन ही बुक्स में से आते हैं। जितना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा उतनी ही आसानी से आप MDCAT क्लियर कर सकेंगे। Azazullah from Saidu Medical College, first year MBBS. I did my FSC from Government Degree College Mingora Swat and secured 182 marks out of 200 in 2024 MDCAT. My kind suggestion to all the MDCAT aspirants is that apart from study, believe in yourself, be confident and learn from your mistakes and inshallah you will be successful. और आखिर में मैं कहना चाहूँगा कि टेस्ट के बाद टाइम होता है 3 to 4 months, तो इंशाल्लाह तबलीग में जाइए, 4 माह लगाइए। इंशाल्लाह मैंने ख़ुद भी किया है और इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, ज़िंदगी का रुख जो है वो बदल जाएगा, क्योंकि दुनिया की ज़िंदगी वो ख़त्म होने वाली है और अपने आखिरत के लिए भी कुछ ना कुछ करना है। तो विद स्टडीज़
give time to tabligh inshallah. Assalamu alaikum. थैंक यू फॉर योर प्रीशियस टाइम. अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो काइंडली सब्सक्राइब इट, लाइक इट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स. अगर आप लोगों का कोई क्वेरी हो तो पुट इन कमेंट सेक्शन. आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर यू ऑल. थैंक यू.